Students in JEE Mains expect 2 questions from complex numbers and multi-concept questions on complex numbers in JEE Advanced. ये important examples जो different concepts पे based है उसको आज हम समझते हैं. I will share the link of complex numbers PYQs asked in JEE Advanced in the description box. इस एग्जाम्पल में ट्रायंगुलर इनइक्वालिटीज फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज होता है. तो क्वेश्चन में यू आर गिवन दैट रियल पार्ट ऑफ z minus 2i upon z plus 2i is 0. You have to find the maximum value of mod of z minus 6 plus 8i. अब यहाँ पर हमें z की वैल्यू चाहिए. तो फर्स्ट थिंग इज यू ट्राई टू फाइंड z by simplifying the given equation. So when you simplify the given equation, you will be getting mod z square is 4 or z is 2. Now use the triangular inequality z1 plus z2 less than or equal to mod z1 plus mod z2. So over here we have to find z plus minus of 6 plus 8i. That will be less than or equal to first term क्या है z mod z plus second term mod of 6 plus 8i. Okay, so you will get this equal to 2 plus root of 36 plus 64. The answer is 12. ये जो एग्जाम्पल है उसमें फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय द कॉन्जुगेट. तो डिनोमिनेटर है वो हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, दैट विल बिकम 2. और न्यूमरेटर में 1 प्लस आई होल स्क्वायर 1 प्लस 2i प्लस आई स्क्वायर. आई स्क्वायर क्या है -1, तो 1 - 1 तो कैंसिल हो जाएगा. तो न्यूमरेटर में रहेगा 2i अपॉन 2 मीन्स i. तो होल टर्म ऑफ लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम i रेज टू m by 2. उसी तरह से जो सेकेंड टर्म है वो सिंप्लीफाई होके हो जाएगा i रेज टू n by 3, बोथ आर इक्वल टू 1. तो क्या मिल गया, m by 2 इज इक्वल टू 4k1. ये जो ट्रिक है वो आपको हमेशा रिमेंबर करनी है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें i की क्या प्रॉपर्टीज है. i रेज टू 4k इज इक्वल टू 1, इसीलिए m by 2 हो जाएगा 4 फॉर सम k1 4k1, n by 3 इज 4k2. तो अब लीस्ट वैल्यूज m and n की क्या होगी, 8 and 12. तो जीसीडी उसका होगा 4. तो आंसर इज 4. तो दिखने में एक क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लगता है पर स्टेप बाय स्टेप यू गेट द आंसर वेरी इजीली. आंसर इज 4. इस एग्जांपल को दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. यू आर गिवन अ सेट R which has ordered coordinates of the type AB which satisfies the relation a plus 5b is equal to 42 and a and b are natural numbers. तो आपको ऐसे कितने एलिमेंट्स मिलेंगे such that a plus 5b is equal to 42. तो फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट पार्ट में यू फाइंड हाउ मेनी सच एलिमेंट्स. तो 8 एलिमेंट्स मिलते हैं आपको, तो m इज 8. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है जहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर का यूज करेंगे हम. सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to m 1 minus i raised to n फैक्टोरियल. देखने में ये कॉम्प्लिकेटेड लगता है बट सॉल्व इट, it will turn out to be quite easy. This is equal to some complex number x plus iy. ठीक है, तो सबसे पहले सिग्मा रनिंग फ्रॉम 1 to 8 1 minus i raised to n फैक्टोरियल, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट और बेसिक कॉन्सेप्ट यूज होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, विच इज यू नो आई स्क्वायर इज -1. ठीक है, देन आई क्यूब विल बी आई स्क्वायर इंटू आई, दैट मीन्स -1 इंटू आई और -i. तो उस तरह से है. तो ऑलवेज रिमेंबर i रेज टू एनी 4k इज 1, i रेज टू 4k plus 1 is i रेज टू 4k plus 2 is -1, i रेज टू 4k plus 3 is -i. रिमेंबर दिस फॉर एनी इंटीजर k, दिस विल ऑलवेज होल्ड. तो सिर्फ अब उसमें वैल्यूज पुट करनी है. 2 फैक्टोरियल मीन्स 2, 3 फैक्टोरियल मीन्स 6, उसके बाद हो जाएगा 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल पर यू नो दैट i रेज टू 4k इज 1, तो उसके बाद सब एलिमेंट्स 1 हो जाएंगे. तो दिस समेशन विल बी इक्वल टू 5 minus i. उसके बाद तो यू जस्ट हैव टू इक्वेट टू द x plus iy कॉम्प्लेक्स नंबर. x is 5, y is -1, तो हमें फाइंड करना है m plus x plus y which is equal to 12. द आंसर इज 12. क्योंकि हमें दो पार्ट में सॉल्व करना पड़ेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. हमें ये एक्सप्रेशन दिया है v इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर प्लस z माइनस 3 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ z माइनस 6i स्क्वायर. अब ये एक्सप्रेशन है, उसकी मिनिमम वैल्यू v0 है और ये मिनिमम वैल्यू कब मिलती है, व्हेन z इज इक्वल टू z0.
and then you have to find the value of the given expression. So you will have to find V0 over here and Z0 over here. First find Z0, from that try to find what is V0 and then put in the equation. The first part में you just always assume complex number का कोई भी example है, by chance you don't get any method, first of all take a complex number Z which is equal to sum A plus BI and move forward. So over here we get the expression B in simplified form as 3 into a minus 1 whole square plus b minus 2 whole square plus 10. Now over here inside both the terms having a and b are squares. So the minimum value will be obtained when you put a is equal to 1 and b equal to 2. a is equal to 1, b equal to 2 रखने से इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो मिलेगी. तो हमारा z0 क्या हो जाएगा? a plus bi 1 plus 2i. Now use this a is equal to 1, b is equal to 2 to get V0. So V0 will be equal to 3 into 0 plus 10 is equal to 30. So first thing is Z0 is 1 plus 2i, and from that we have got V0 which is equal to 30. Just put these values in the given expression and you will get the answer to be 1000. एग्जाम्पल्स मैंने आंसर इनके साथ दिए हैं. प्लीज टेक अ पेन एंड पेपर एंड सॉल्व ऑल ऑफ देम. और हमने आज जो एग्जाम्पल किए हैं वो भी आप सॉल्व कीजिए, सो यू विल गेट अ वेरी गुड रिविजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स.